हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमबीए एंड अपकमिंग सीएटी या फिर कॉमन एडमिशन टेस्ट एग्जाम्स के ऊपर। आज हमारे साथ यहाँ पे है उन्नति, जो कि आईआईएम कलकत्ता में पढ़ रही है। सो आई वुड आस्क उन्नति टू काइंडली इंट्रोड्यूस herself. Hi, everybody, and hi, Sarthak. Thank you for welcoming me into this as a part of this great venture that you have started. Um, my name is Unnati, and I'm Calcutta में पढ़ रही हूँ. I have done my undergraduate from IIT Delhi in chemical engineering, where I pursued a dual degree program, a BTech and MTech. I have worked for a year at American Express after that, and after that I pursued, gave this common admission test or CAT as we call it, and I entered IIM Calcutta after its rigorous process. And currently, I'm in my second year. With the MBA degree, I'm also pursuing a SEMS MIM degree, which IIM Calcutta offers, and which helps me. MIM basically means Masters in International Management, so it is kind of a complementary another degree after my MBA degree. And at the same time, MBA right now it's online, but I'm doing a lot of courses as well as attending events, or the corporate and alumni sessions which MBA offers. And I'm happy to talk about MBA, CAT, anything which if you want me to answer. थैंक यू उन्नति फॉर द ग्रेट इंट्रोडक्शन। तो हमारा पहला सवाल है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सीएटी एग्जाम्स, एंड क्योंकि हम जानते हैं कि अगले कुछ ही दिनों में सीएटी एग्जाम्स है, डू यू हैव एनी लास्ट मिनट टिप्स? तो फ्रैंकली कैट एग्जाम इज 2 weeks अवे, तो 2 हफ्ते में आई वुडंट सजेस्ट कि कोई बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करे या बहुत ज़्यादा नए टाइप के क्वेश्चंस करे. आई वुड सजेस्ट, if you're giving the CAT exam this year and if you've started your preparation a couple of months back at least, then abhi ke liye for the next 2 weeks, one should just revise. So in general, in sare months ki preparation mein, everybody would have done some mock exams. Everybody would have taken some sectional exams, sectional tests and all. तो ऐसे में फॉर द नेक्स्ट 2 weeks आई वुड सजेस्ट कि ज़्यादा रिविजन पे फोकस की जाए एंड नए टाइप के क्वेश्चंस में कम. इंडिविजुअली फॉर द सेक्शंस, तो कैट एग्जाम जैसे कि काफ़ी लोगों को पता ही होगा जो एग्जाम दे रहे हैं कि देर आर 3 sections: वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विच इज कॉल्ड VARC, LRDI, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. तो इन तीनों सेक्शंस के लिए भी लास्ट 15 days में आई वुड सजेस्ट थोड़े डिफरेंट टाइप की प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी. तो जैसे VRC में आई गेस देर आर लॉन्ग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस. तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक लोगों को ये प्रिपेयर करना चाहिए कि वो एक कंप्यूटर स्क्रीन पे वो बड़े बड़े रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ सके. तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे शुड प्रिपेयर मोस्टली कंसंट्रेशन एंड ऐसे टाइप की चीजें. VARC में रिविजन may not help a bit because every time the concept is, the question may be different in VARC. तो ऐसे में what people can do in the next few days is just they should ensure कि they know the different type of questions. They should ensure कि वो टाइम पे कर पा रहे हैं ये सेक्शन कंप्लीट या नहीं. इस ईयर का एग्जाम पिछले सालों से डिफरेंट होने वाला है इन टर्म्स ऑफ 3 hour एग्जाम की जगह 2 hour एग्जाम होने वाला है, and each of the 3 sections are now 40 minutes each. But this shouldn't change anything in the preparation strategy, except for the fact just to be aware that you have 40 minutes now, and obviously questions will be less also. But उस टाइम पे तुम कैसे ये एग्जाम कंप्लीट कर पा रहे हो, किस पे फोकस करना है. तो अभी तक जो भी लोगों ने टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करी होंगी वो कैसे which has worked well for them. So maybe start with reading comprehensions because उसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, 4-5 क्वेश्चन होते हैं each.
जो उसी से सॉल्व हो जाते हैं. बट not to miss out on the verbal ability part, जो individual questions होते हैं but they are relatively easier to understand, like para jumbles, like find the odd one out, what is the conclusion or summary of this small 3-4 passage, except 3-4 line passage. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस लोगों को पता होने चाहिए, दे शुड बी अवेयर कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं एंड दे शुड बी कॉन्फिडेंट इन दिस. For LRDI and for quant, I would say to revise the visual structures which people make while solving LRDI exam, जो काफी specific और unique होता है. And since time is less, it becomes even more important to choose the best set in LRDI. So give starting ke max 5 minutes or 4-5 minutes to choose what the exam, which sets you would like to prioritize. And same with quantitative ability section, because these two require practice. And ऐसे में I wouldn't suggest कि तुम new questions करके उन्हें you're getting scared कि ऐसे भी question आ सकते हैं या नहीं. Focus on जो वो question थे. So if you've taken a test series, maybe you know कि तुम्हारे कौन से type के question गलत होते हैं. तो filter out your previous question जो तुमने incorrect किए हैं या जो तुमने अटेम्प्ट नहीं किए बट इन जनरल बाकी लोगों ने ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं. यूजुअली ये टेस्ट सीरीज में दिख जाता है. दे हैव दिस मैट्रिक्स. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखो जो तुमने कम किए हैं बट बाकी जो टेस्ट गिवर्स हैं उन्होंने काफी हाई रेशियो में अटेम्प्ट किए हैं और करेक्ट किए हैं. तो मे बी ऐसे टाइप के क्वेश्चन यू कैन रिवाइज. एंड उसके अलावा if you have made some notebook for formulas etc, revise them but do not memorize them, because CAT does not test your memory. It not only tests your speed also, it just tests your concept. So focus on the concept. And in general I would suggest ke मतलब इतना स्ट्रेस मत लो. You know already के कौन से टाइम पे एग्जाम है. 3 slots are given this year. तो उसके बेसिस पे यू फॉलो योर स्लीप साइकिल सच दैट यू आर इन द मैक्सिमम अटेंशन एंड दिमाग उस वक्त सबसे ज्यादा चल रहा है जिस टाइम पे एग्जाम है. उस टाइम पे तुम कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो. या एग्जैक्टली. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू शुडंट बी लाइक अगर मेरा एग्जाम आफ्टरनून में है तो आफ्टरनून में आई हैव अ स्लीपिंग हैबिट आफ्टर लंच एंड ऑल. तो प्रिपेयर योरसेल्फ एंड keep healthy and have a good sleep cycle, because at the end ऐसे टाइप के एग्जाम्स पे बहुत ही last minute prep may not work. If you're planning to give CAT this year, so for them especially, if you're planning to just start preparation, तो हाँ start from the concepts etc. But for those who are giving this year, focus on the revision and focus on keeping yourself attentive during that time. And obviously जो भी admit card में instructions हैं etc, for the D day, actually test day पे क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें allowed हैं, वो सब prepare करके रखो, so that you do not have extra tension on the exam day के maybe I forgot something, maybe I got something extra, अब ये कहाँ रखूँ मैं on the test center. And obviously follow all the COVID guidelines etc, ताकि you do not have tension. And one should prepare कि मेरा center कहाँ पे है. Even if you can't go at this point of time, you should ensure कि you have a particular transport on the day to go to that center, because essay exams you do not want to reach late and वहाँ पे और again tension हो जाती है. And I think just focus on what you've done till now. उसी को रिवाइज कर सकते हैं, उसी को one more thing I would suggest कि if any person अभी अगर कोई मॉक्स दे रहा है तो मे बी इस हफ्ते दे, बट लीव इट बिफोर द लास्ट वीक ऑफ बिफोर कैट एग्जाम, क्योंकि ऐसे में एक तो मॉक नेक्स्ट नए क्वेश्चन देता है, प्लस ऐसे में इफ यू सी योर मार्क्स, इफ दे आर गुड you will get overconfident. If they are not good, you may get underconfident, and if they are average, then perhaps it doesn't have any effect. So ऐसे में just do not see marks, because it may not reflect your performance on the CAT day.
But if your confidence changes because of this, then that may have a detrimental effect on the CAT day. So ऐसे में would suggest not giving mocks. But हाँ, माइंड को ऑक्यूपाइड जरूर रखना है रिविजन से ही, सो दैट यू नो दैट प्रैक्टिस इज देयर कि मैं ऑन द एग्जाम डे भी ऐसा नहीं है कि आई एम थिंकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स व्हिच आई डिड 2 weeks बैक. तो माइंड को ऑक्यूपाइड रखना है, बट ऐसे मार्क्स रिलेटेड कंपोनेंट से नहीं, जस्ट कॉन्सेप्ट से. Yeah. Thank you Unnati for the very elaborate answer, and I'm very sure कि हमारे viewers को इससे बहुत फायदा होने वाला है. Now the next question is कि IIM के interviews के लिए कैसे prepare किया जाए? So what are your tips regarding that, and how should one prepare for it once the CAT के exams are done? Yeah, तो I would suggest कि once the CAT exam is done, उसके बाद थोड़े दिन लोगों को आराम करना चाहिए, because interview preparation is itself काफी can be hectic, and of course उसमें सिर्फ कुछ sections या कुछ you know CAT exam जैसे कुछ specific concepts पूछे जाएंगे ऐसा नहीं है, वो काफी you know vast हो सकता है in interview. In general, since the CAT exam is इस वक्त same time पे हो रहा है than last year's, I would suspect the interviews also would start in the same time, which is February. February के around ये start हो जाते हैं interviews, and mostly हर IIM या हर major MBA college in India के interviews में similar components होते हैं. One would be some kind of group activity or group discussion, GD. The second would be something on the lines of a writing ability test, जो आपके कैसे लिख रहे हो, कैसे in a written form कैसे you are expressing your views on the topic, जो भी topic दिया हुआ है. That is the second component, and the third and major component obviously is the interview. So for all of these components preparation थोड़ी different होती है. So for the written ability tests and the group discussion or group activity components, I would suggest कि mostly इनके लिए you have to be thorough with the recent news. So some people for the VARC preparation, they are already you know reading newspapers etc. But अगर अभी तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो आई थिंक पढ़ना शुरू कर दो कि क्या हो रहा है वर्ल्ड में, क्योंकि मोस्टली ग्रुप डिस्कशंस एंड राइटिंग एबिलिटी टेस्ट दोनों में ऐसे ही टाइप के टॉपिक्स आते हैं. एंड इफ यू हैव सम ओपिनियंस ऑन दैट, इवन इफ यू डू नॉट हैव यू नो डू नॉट नीड टू रिमेंबर पर्टिकुलर फिगर्स एंड क्या रिसर्च कह रही है एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स इतने जरूरी नहीं है, बट इफ यू शुड हैव सम काइंड ऑफ ओपिनियंस आइदर ऑफ योरसेल्फ या इन जनरल के वर्ल्ड में क्या डिफरेंट ओपिनियंस चल रही हैं रिगार्डिंग द पर्टिकुलर टॉपिक. So this can be something on the lines of US election जो अभी हुआ है. This can obviously be on the lines of COVID and vaccine, and maybe beyond this. So for example, if vaccine बन गई, how are we supposed to distribute it in the world? Shall it be only profit based या कुछ और other? What kind of metrics can we evaluate? ऐसे टाइप के simple questions भी आ सकते हैं in a group discussion where अगर किसी ने पहले GD नहीं दिया है ग्रुप डिस्कशन, तो उसमें यही होता है कि देर आर 6 to 7 people or maybe more sitting in a room, and everybody has this one topic to discuss, and they discuss it ऐसे ही जैसे कोई भी टॉपिक काम के, if people are working in jobs या school college projects में they must have worked in teams, तो वैसे ही जैसे डिस्कशन होती है वैसे ही थोड़ी फॉर्मली ग्रुप डिस्कस करता है, एंड फाइनली कम्स टू अ कंक्लूजन एंड सजेस्ट सम रिकमेंडेशंस कि मेरे को ऐसे में आगे क्या बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए आगे. ये होता है यूजुअली एक GD में. तो उसमें ऐसे टाइप के टॉपिक्स होते हैं, एंड व्हाट द पैनलिस्ट जो वहाँ पे इंटरव्यूअर्स होते हैं वो कैसे GD में तुम्हें इवैल्यूएट करते हैं. यही होता है कि वो तुम्हें देखते हैं कि कैसे तुम कितना अच्छा बोल रहे हो, तुम्हारा कंटेंट कितना अच्छा है. तो हेंस यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट द न्यूज़ इज. Also, for both of these, there are some frameworks involved. So when people are done with the CAT exam, they can Google such frameworks like
PESTEL is a very common framework which basically takes into account the political, economic, social, technological, legal, and environmental aspects of a problem. So this is PESTEL. So ऐसी type की चीजें just helps you remember कि whenever you are looking at a problem, there are such kind of things which you need to look into. These are the various stakeholders. तो ऐसे चीजों के लिए इवन व्हेन यू आर राइटिंग इन अ राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, तो उसमें तुम्हें उस वक्त नहीं पता चलेगा कि तुम्हारा कैसा गया एज कम्पेयर टू अदर्स. बट इफ यू आर यूजिंग सच अ फ्रेमवर्क या इफ यू आर यूजिंग थोड़ा होलसमली तुम उस जो भी टॉपिक दिया है उसको इवेल्युएट कर रहे हो, तो यू विल गेट डिसेंट मार्क्स इन दिस. एंड इन नेट पे या कहीं पे भी ऐसे फेसबुक एंड पागल गाय एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में यू विल गेट last year topics, or you can ask seniors. So ऐसे में you will get practice topics where you can evaluate yourself कि कितना तुम्हें इसके बारे में आता है. And for the interview, which is the main thing, I would suggest कि सबको जो भी उन्होंने last few years में in their undergraduate life, in their work experience जो भी किया है, they should be thorough about it. So it's easier said than done, but in general, there are particular things which you should one should reflect into कि मैंने अपने अंडरग्रेजुएट लाइफ में ये एक्टिविटीज करी है, इन्होंने मुझे क्या क्या सिखाया है, इनके आगे मैं इसमें मैंने जो भी सीखा या इनके आगे मैंने कैसे लोगों को हैंडल किया, मैंने क्या चैलेंज फेस किए, ऐसे टाइप के जो बेसिक HR क्वेश्चंस जो लोग कहते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. एंड इन जनरल दे कैन आस्क क्वेश्चंस लाइक के बेसिस कि क्या जो भी तुम वर्क एक्सपीरियंस में काम कर रहे हो उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसी के रिलेटेड दे कैन आस्क क्वेश्चंस लाइक करंट लाइफ में उसको अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट कि मैं डेटा साइंस में काम कर रहा हूँ, दे कैन आस्क कि आजकल बिग डेटा कैसे वैलिड है, जनरल सिचुएशंस इन डेली लाइफ में तुम कहाँ देख रहे हो बिग डेटा यूटिलाइज होता हुआ. सो हाँ तुम देख रहे हो ये समथिंग लाइक दैट. हाँ डेफिनेटली. और आजकल तो यूज हो रहा है इन दिस. हाउ इज आरोग्य सेतु ऐप यूटिलाइजिंग ऑल ऑफ दिस डेटा, or any app, any COVID tracking app across the nations, right? So I'm not talking about the privacy concerns here. I'm just talking about the concept of big data behind it if you're working in an analytics role. So this is kind of a relation जो एक interviewer expect करता है कि तुम अपने एक small circle of your work से बाहर निकल के भी सोच सकते हो उस topic की relevance का. And obviously basis your profile. So if you have maybe a good academic profile, you would like to highlight that. If you have a good work experience या बहुत academically and work में तुम achievements पा चुके हो, तो उसको highlight कैसे करना है. And उसमें achievements में भी सिर्फ achievements नहीं, यही कि क्या challenges overcome किए या कैसे लोगों को तुमने साथ लेके आगे बढ़ के ये अचीवमेंट्स करी हैं. एंड अगर तुम किसी हॉबी में बहुत अच्छे हो तो ये सब भी तुम्हें हाईलाइट करना है. एंड इन जनरल दिस इज हाईलाइट करना एक बात है, बट इन जनरल इफ यू वांट टू डेवलप समथिंग इन द नेक्स्ट 2 months बिफोर द इंटरव्यूज, तो इफ यू assume that somebody is interested in music and guitar, तो एक लेवल होती है कि तुम म्यूजिक में इंटरेस्टेड हो, गिटार प्ले करते हो, बट उसके आगे क्या, इफ यू कैन शो केस टू देम कि मैं यूट्यूब वीडियोस करता हूँ, आई मे बी गिव सम लेसन्स टू अदर पीपल, आई ट्राई टू लर्न अदर इंस्ट्रूमेंट्स, या आई ट्राई टू डू सम ऑनलाइन जैमिंग या मिक्सिंग अप विद पीपल या कुछ ऐसा. तो यू आर काइंड ऑफ शोकेसिंग योर एंटरप्राइजिंग नेचर इन फ्रंट ऑफ देम. So this is, it's not just, it kind of differentiates you from a person who only has an interest in music, because यहाँ पे दिख रहा है कि you're utilizing that interest and learning new skills, you're teaching other people, you're kind of exploring उसी skill में more mastery in that. तो
I know this is not very easy, but in general, even if you talk something like मैंने COVID में cooking सीखी and now I'm an expert in Italian cuisine, it's just something like that. तुम कहाँ पे अपने enterprising nature दिखा रहे हो, because this will definitely be needed in an MBA life and after after in a corporate or in a startup, whatever you do. So they do judge kind of these spikes and these highlights in your profile. तो इसको डेवलप करना है, इसको ऑलरेडी है, मोस्टली होता ही है सबके बैकग्राउंड में, बस उसे आगे लाना है इन मे बी 20-minute इंटरव्यू. तो वो प्रैक्टिस से ही होगा. तो आई गेस एट द 2-month लेवल सबको अपने सीनियर्स एंड पेयर्स से मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, एंड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे ऐसे में नेट से या सीनियर्स से. तो वो काफी हेल्प करेगा एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा. थैंक यू उन्नति. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमबीए क्यों परस्यू करना चाहिए एंड एमबीए तुम्हारी लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट करता है. सो हाउ डज एमबीए इम्पैक्ट योर लाइफ एंड who and why should one pursue an MBA degree? So ये क्वेश्चन काफी लोग पूछते हैं, बिकॉज इसका शॉर्ट आंसर ये है कि MBA एक जनरलिस्ट डिग्री है मेरे हिसाब से. तो आई वुड से कि अनलाइक मास्टर्स इन साइंस या इंजीनियरिंग, MTech, MS, ये मोस्टली एक स्पेशलाइज्ड मास्टर्स डिग्रीज होती हैं जिनमें you can get into the depth of that particular subject, whether it's theoretically या जो भी experientially through lab work etc. But in general these are mostly in-depth wali. MBA in general is a generalist degree, which is not a bad thing. In fact, it is very helpful for those who want to experience multiple aspects or multiple attributes of a business world. So in general, MBA tells MBA courses are such that one gets to know a lot about the different aspects of the business. So it's like a multifaceted approach. So if you can talk about in an MBA curriculum, you have courses which entail के एक ही बिजनेस का ऑपरेशंस साइड कैसे हैंडल करना चाहिए, एक ही बिजनेस का फाइनेंस एस्पेक्ट कैसे हैंडल करना चाहिए, उसकी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी कैसे देखनी चाहिए, उसमें क्या क्या आईटी और टेक्नोलॉजी को कैसे तुम आजकल लेवरेज कर सकते हो. एंड in terms of since people are involved in any business in the organization, तो कैसे उस organization के aspects को तुम टेक केयर कर सकते हो, उसको कैसे लेवरेज कर सकते हो एम्प्लॉइज को, एंड कैसे एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर सकते हो फॉर द एम्प्लॉइज. तो ऑल ऑफ दिस इज इन encompassing in that degree. So it's kind of a multifaceted approach जैसे कि मैंने कहा. Plus so if eventually like if one wants to get into the corporate sector, or one wants to have this open their own business या their own startup, तो ऐसे में MBA is a good choice just to know about what kinds of aspects one would have to deal with in a corporate life or in his own business. And ये सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ theoretically पढ़ाया जाता है. तो in general in any MBA, especially in India and most of the top universities and abroad, they talk about ये सब case methodology से पढ़ाया जाता है. तो you have cases which tell you about how good companies have come to this point of this position by looking at one particular aspect of them. So maybe by looking at only the strategical aspect of them, by looking at how they handle their finances, how do they maintain their relationship with their suppliers, vendors, etc. तो ये सारे different subjects में through cases पढ़ाया जाता है. And plus since everything in a corporate life involves teams, so most of the MBA projects etc are also in teams. So most of these ideologies के कैसे business होता है through this multiple approach
is being taught through this different class variations and academic type की different चीजें जिससे तुम्हें business का aspect समझ आए. तो one more example which I would like to give is this simulation games. तो इसमें ऐसे games होते हैं जिसमें you are handling your business and maybe उसमें you are handling the production facility, the R&D aspect, the production, which is the manufacturing aspect, the financial aspects, maybe the marketing aspects, etc. And ये तुम multiple years में कर रहे हो, and which are the multiple rounds of that simulation. And basically at the end of say 8 to 10 years, yeah, 8 to 10 simulations rounds, you would get to a good profit level, yeah, you would get to a good market share level. So this basically teaches you how you can manage all of these different aspects, which you would eventually do in a corporate life or when you start your own business. And to your answer कि ये किसको करना चाहिए, तो I think ऐसे किसी को जिसको बाद में अभी इतना पता नहीं है कि किस उसमें जाना है, किस फील्ड में जाना है, and maybe wants to explore the options, because MBA, since I said कि इतने सारे aspect बताता है, तो it gives you this opportunity to look at various aspects, talk to people जो in different sectors में काम कर रहे हैं, and then decide कि तुम्हें कहाँ पे जाना है eventually. या इन जनरल किसी को जिसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और ये सब इंटरेस्ट है जानने में कि ये सब कैसे होता है, वो उसको करना चाहिए. एंड obviously अगर किसी को अपना करियर स्विच करना है, तो मे बी somebody who is in a particular role and wants to switch his or her career into a different sector, maybe वो भी IT specific role में है, and then he wants to switch into a finance role. So doing an MBA may be, you know, a faster way to switch his career, his or her career. So I guess ऐसे type के लोगों को ये करना चाहिए, obviously keeping in mind the different aspects, you know, because there is an opportunity cost if you're leaving a job, etc. But in general ये सब ऐसे किसी को करना चाहिए, but they should make an informed decision by talking to seniors, etc. Whether it is the right you know, thing for them to pursue an MBA. Just don't go with the herd. Okay. MBA is common in India. Yeah. Yeah. Okay, thank you so much. Now my next question would be, how MBA has personally impacted your life, and how is life in IIM in general? Yeah, I think MBA has impacted my life a lot. So in general, I would say कि MBA has taught me many things जो शायद मुझे पहले या तो बहुत experience के साथ आती, या फिर बहुत interaction के साथ आती, वो by default आ गई, because MBA or its curriculum or its various aspects has required me to interact with so many people. I think the first and foremost would be time management skills. MBA is a very heavy curriculum in general, not only in India, but in general, MBA is considered a very heavy degree in terms of it requires you to interact with a lot of people. It requires you to do a lot of live projects and maybe internships side by side your course curriculum. So, and as I said, there are a lot of projects and assignments involved in MBA courses as well. So, in sense, there are a lot of things on your plate when you're doing an MBA. And if you're interested in anything else, if you're interested in, you know, organizing some business fest, business competitions, if you're interested in some hobby which you're pursuing side by side in your college life, with that then you also have to manage all of those, right? तो इस सब में या डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट इज वन स्किल जो आ जाती है, एंड जो आनी भी चाहिए, बिकॉज यूजुअली यू नो कॉर्पोरेट लाइफ्स आर हेक्टिक, बट in general it's a very good practice. And I think the other would be you know, confidence and communication skill. I don't think that I would be personally very confident in, you know, having such a interaction with you maybe 5 years before, but in general this you know, talking to people, getting out of your comfort zone helps you gain this confidence. And
usually you are out of your comfort zone even in a classroom environment, because there is lot of engagement and interaction which is promoted in a degree like MBA within the classroom itself. So there are class participation, quizzes, etc., interactions within the class also, so presentations within the class also, and so on, student presentations. So yes, वो confidence थोड़ा build up होता है, and I think मेरा भी हुआ है, बिल्कुल. And I think other than that, life in an MBA is काफी diverse, just like the degree. तो जैसे कि मैंने बोला, academically इतना diverse है with the simulations, quizzes, class participation, assignments, projects, etc. And on the other hand, socially भी काफी diverse है, in the sense ये सारे जो clubs and social opportunities to interact with alumni, yeah, interact with corporate, in their corporate workshops. So many companies also hold such kind of workshops for the students, whether it is particularly to a sector, yeah, in general, just to know about the company. तो ये सब भी diverse है. And I think उसके अलावा one thing which is there in MBA, in most of the at least the prominent MBA colleges, is the fact often is the exchange part, जो sadly इस year तो नहीं हो रहा है most colleges in India में, but in general that is also a USP, where students select colleges which they want to go for an exchange term. So they go to some other colleges, maybe abroad, and usme bhi they obviously get to learn about their culture, interact, and form lifelong bonds. But uske alawa they get to learn about how education works in their particular university and their particular country, because everything classroom environment would definitely be different in India versus in some other country, right? So usse bhi काफी कुछ learning होती है. And there are multiple small things, जैसे resources, online resources जो लोग use कर रहे हैं, just to have this make more these team meetings and team discussions more efficient. ऐसी type की चीजें भी तुम्हें new पता चल सकती हैं because of that. It's just very small, but in general काफी learning होती है. And obviously if you stay abroad, तो abroad में रहने वाली जो learning होती है वो different होती है. And plus, if somebody is interested in pursuing such career opportunities abroad, so maybe that kind of opportunities he or she can leverage in that exchange universities. तो हाँ, in ये भी काफी diverse होता है, जो मेरा experience भी थोड़ा बहुत रहा है, because I am currently pursuing some courses from a partner university abroad where I was supposed to go. But in general, I think ये काफी होता है in MBA में. You learn teamwork, you learn communication, you learn time management, and of course you learn just to be open about learning in terms of ये कि किससे interact कर रहे हो, whether it's exchange or whether it's corporate dealings or anybody. So Unnati, you mentioned that you are also doing you are also member in SEMS, and could you also, because you said about these exchange programs and such, could you also elaborate a bit about कि abroad में क्या क्या MBA opportunities है, या फिर abroad में MBA कैसा होता है, if you have any idea about that? Yeah, so I wouldn't say that I know very well, because I did not personally apply for an MBA abroad, before in the last year. But in general, because of my peers, I would know something, so maybe I could highlight that. In general, I think though the MBA ka vision in abroad is mostly the same, to create an overall learning experience about business for students, but in most of the aspects, thoda difference hota hi hai in MBA abroad. I am personally doing a SEMS degree, which is a Master's in International Management degree, which is an opportunity given to some students of IIM Calcutta itself. But other than that, mostly abroad में, in general MBA programs के अलावा this MIM degree, Masters in International Management, or
the degree may be called as international business degree. सो IB. सो ऐसी टाइप की डिग्रीज के नाम होते हैं. थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है, विच आई थिंक पर्सनली आई वुड से कि if anybody wants to know, they should talk to seniors या maybe Google about it. But ये mostly ये degrees होती हैं in the business world and in the master's level in abroad. So for these 2-3 degrees, MBA, MIM, IB, for these degrees mostly selection process में भी फर्क होता है. So like in India we have we give CAT or specific university exams बाकी universities के लिए जो कुछ अपने exams लेती हैं. And उसके अलावा then we have this either group discussions or interview, which I said. And उसके बाद we have the selection. In MBA abroad, we usually give the exam GMAT. Mostly वही चलता है. And उसके बाद then they have this after giving GMAT, one has to apply to specific universities abroad. So यहाँ पे once you've given CAT, by default there is one option to select कि कौन से colleges में you will be interested in the application form, and by default उन सारे colleges में तुम्हारे application तुम्हारे CAT score चला जाता है. Unlike that, in GMAT you usually give the exam and then after the result is out you apply to specific universities जिनका सबका different application form होता है. And obviously that is also an expensive procedure, but still, तो सबका different application form होता है. And mostly in the selection process they in this application form they ask things like statement of purpose, जिसमें तुम्हें बताना होता है कि what is your purpose, कि why तुम्हें इस college से ये degree चाहिए, why तुम्हें ये degree करनी है, what is your motivation behind it. The other component which they may ask you is personal statement, which is different from statement of purpose. It basically involves कि तुम बताओ कि मैंने कैसे टाइप कि मैंने अभी तक लाइफ में क्या किया है, वो मुझे कैसे उसने शेप किया है मेरी पर्सनालिटी को, एंड कैसे वो मेरे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स को इम्पैक्ट कर रहा है, which is the personal statement. And some applications also have essays, जिसमें they give you some topics and उसके basis पे तुम्हें essay लिखना होता है. And again they are testing your writing ability, just like Indian scenario में भी writing ability test होता है. But essays are usually longer and they are more comprehensive in terms of कि क्या कैसे तुम evaluate कर रहे हो उस topic को. तो मोस्टली ये होता है एप्लीकेशन फॉर्म में, एंड एक्सेप्ट फॉर दैट देयर आर सम रेफरेंसेस व्हिच यू हैव टू प्रोवाइड ऑफ सम एडवाइजर या सम मैनेजर फ्रॉम योर वर्क. अदर देन दैट आई थिंक सिलेक्शन प्रोसीजर इन जनरल बाहर के स्कूल्स में थोड़ा डिफरेंट होता है इन द टर्म दैट इन द एस्पेक्ट दैट दे प्रेफर मोर डाइवर्सिटी एंड मोर वर्क एक्सपीरियंस. सो मोस्टली उनका काफी फॉरवर्ड लुकिंग एस्पेक्ट होता है. सो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल देखते नहीं है कि तुमने पास्ट में लाइफ में क्या तुम्हारी अचीवमेंट्स रही हैं या क्या तुमने अच्छा काम किया है, वो उसको भी देखते हैं. बट इन जनरल उनका फॉरवर्ड लुकिंग एस्पेक्ट होता है कि तुम्हारी फॉरवर्ड मोटिवेशन क्या है, कि तुम ये बिजनेस डिग्री या ये डिग्री लेके तुम क्या लाइफ में करना चाहते हो, कैसे इसे यूटिलाइज करना चाहते हो फॉर योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स. So if they feel कि you are able to justify your motivation for this degree, then they do select you. And like I said कि काफी diverse होता है, unlike India where mostly you'll find engineers in an MBA school. वहाँ पे तुम्हें engineers may be a minority. You would find business जो अपने undergraduate business में करके आए हैं, या तो वो लोग mostly दिखेंगे, या you can find people in philosophy, sociology. You can find people who are who have work experience in healthcare sector, in sciences, etc. more. And obviously वहाँ पे ज़्यादा global batch भी होता है, तो people are there who are from multiple countries and cities. तो उस aspect में that is very different. But yeah, if you want to do a degree from abroad, I would say choose that option if you have thoda bahut inclination, if you want to stay in abroad, because that will be more valuable if you want to stay in abroad. That is my personal opinion, but I would suggest again to
talk to people and see कि कैसे उनके careers carve out हुए हैं after a degree from any B school abroad. And in general, so this is more about the selection procedure in terms of, I think some colleges also have something of a group activity or an assessment center, but that is very limited. Would just encourage people to check out unke colleges ki website etc. for this कि कैसे उनका selection procedure होता है. In terms of the class strength, etc., and the class activities, the class strength may be less, but the class activities, the case-based methodology may remain the same. तो उसमें काफी ऐसा ही होता है. There are corporate speakers, there are guest lectures, there are cases जिसके basis पे they analyze what the successful story behind each of the big companies or the small innovations are. तो उस sense में वो different होता है. One more thing is they do value this, especially masters in international management, ऐसी type की degrees would value anybody's more contribution to the global front. So in general, like India mein MBA mostly deals with people starting up their own business or getting into corporates, unless one has a specific interest. But wahan pe they do have this trips abroad, so that wouldn't be just an exchange, but in general doing something, maybe going to a country and doing something on the ground for them, maybe building up a house or just planning and strategizing कि कैसे करना है वहाँ पे maybe health sector कैसे अच्छा करना है या कुछ, but on ground activities. So some colleges or universities also offer that kind of trips, which are educational trips, but involve you contributing to the global front, especially in degrees like masters in international management. So if you're interested in that kind of a thing, then also a foreign degree may be of relevance to you more, because it will kind of help you interact with more such people who are doing work on these lines. But then again, I would suggest that if somebody is interested in abroad, in a B school abroad, I would suggest कि वो इन चीज़ों के बारे में Google करे कि कौन सी universities which are good, उनकी websites पे जाए and maybe देखे LinkedIn पे कि कौन उनके seniors हैं जो ऐसे universities में जा चुके हैं, उनसे ज़्यादा बात करें. I think they would be in a better position to answer this specific questions which people may have regarding this. Okay. Thank you, Unnati, for joining us in this session. And I'm pretty sure all the information that you have provided would be very beneficial for our viewers. And I think I would also link your Facebook and your LinkedIn in a video, so that if someone would have any further questions, they can approach you. Yeah, that's all right. Thank you, Sarthak, for calling me, and I just hope that whatever I've said would be helpful to all the viewers and to those who are preparing to do an MBA, and maybe those who have some questions about an MBA.